बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सदर ट्रंप के साथ एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग, और इस मीटिंग के बाद से आप देख रहे हैं कि भारतीय नवाज मीडिया और उनका सोशल मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। ये मुलाकात अपने आप में एक तारीखी मुलाकात है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नई जहत, एक नए बाब का आगाज़ हुआ है इस मुलाकात से, और इस मुलाकात में बहुत सारे अहम उमूर जो हमारा ताउन हो सकता है अमेरिका के साथ, उसको कैसे वुसअत दी जा सकती है, उस पर बात हुई है। लेकिन इस पूरी मुलाकात को मुतनाज़ बनाने की जो भारत की कोशिश है वो एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान ने ईरान के मामले पे बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ही वाज़ेह स्टेटेड अपनी पॉलिसी, अपना मौक़िफ़, अपनी पोजीशन ली हुई है, और पाकिस्तान किसी सूरत उस पोजीशन से नहीं हटेगा। पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ हर तरह की जारियत के ख़िलाफ़ खड़ा है, और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंटरेस्टिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग वेस्टर्न मीडिया, और इंडिया का मीडिया तो खैर है ही हॉस्टाइल, वो है ही पागल, वो तो हमने पाकिस्तान भारत जंग में देख लिया था। तो वो बहुत सारी ऐसी गलत खबरें, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की और इजराइल की मदद कर रहे हैं इंटेलिजेंस की फराहमी में। बिल्कुल बेबुनियाद है, मन घड़त है, झूठ है। पाकिस्तान ने अपनी बेसिस देने का कोई वादा किया है, बिल्कुल झूठ है, मन घड़त है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से और ISPR की जानिब से, हमारे तमाम सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से इस तरह की तमाम जो मुहिम और झूठ हैं उनकी नफ़ी की गई है, और इसको महज इंडिया की लॉबी का एक प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान को बदनाम करने की, और पाकिस्तान का जो अब एक सफारती महाज पे आप देखें नाम रोशन हुआ है, उसको मलाइन करने की एक घटिया कोशिश है। तो आज के प्रोग्राम में सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात और उसमें क्या गुफ्तगू हुई उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए और मुस्तकबिल के लिए ये मुलाकात कितनी अहम है उस पर भी बात करेंगे। फिर ईरान इजराइल का जो तनाज़ा है उसमें कितना चांसेस हैं, कितने कि अमेरिका उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सदर ने कहा है कि 2 हफ्ते में वो फैसला करेंगे कि वो भी ईरान पर हमला करेंगे या नहीं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से अभी तक इसराइल की जितनी भी जारियत है, जो उनका रद्द-ए-अमल है ईरान का, वो दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन यहीं तक बात नहीं रुक रही, बल्कि ईरान ये कह रहा है कि हमने अपनी जो ज़ाहिरी सलाहियतें हैं उसका 30% अभी तक हमने इस्तेमाल किया, उसका इजहार किया है, और जो पोशीदा सलाहियत है मिलिटरीली उसका 5% अभी हमने बताया। अगर हम अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया हैरान रह जाएगी। अभी भी अगर आप देखिए तो इसराइल पैदर पे हमले कर रहा है, और लोगों का ख्याल था कि इतने फ्रीक्वेंट हमलों से ईरान का सिस्टम नाकारा हो जाएगा, ईरान का डिफेंस सिस्टम नाकाम होगा और ईरान जवाबी कार्रवाइयाँ नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान की रोज़ बरोज़ जो जवाबी कार्रवाइयाँ उनमें शिद्दत आती जा रही है। तो ये तमाम मामलात हैं जी जिन पे आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है इस पूरे रीजन में, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ जो मामलात हैं उन पे भी बातचीत करने के लिए हमेशा से तैयार है। पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशन पूरी दुनिया में अहम कैपिटल्स और अहम लीडर्स और इदारों से मुलाकात के बाद पाकिस्तान वापस आ चुका है, और पाकिस्तान ने यकीनन जो सफारती महाज है वहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे माइकल कुगलमैन, जो कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ऑथर हैं, एक्सपर्ट हैं, जो कि जनूबी एशिया के जो उमूर हैं बिलखुसूस उनको कवर करते हैं, उनके माहिर हैं, और साउथ एशिया इंस्टीट्यूट एट दी वुडर रोड विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स में वो डायरेक्टर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन एक बड़ा क्रेडिबल मैगज़ीन है, उसके लिए लिखते हैं जी। पहले हिस्से में वो हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि दूसरे हिस्से में एजाज़ चौधरी साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं और बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम माइकल कुगलमैन। माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इट्स इंडीड अ प्लेयर टू हैव यू ऑन माई शो। So to start the conversation, I would really like to talk about something which is, unusual in Pakistan-US relationships history, and it is making headlines in Pakistan and across the globe. And I'm talking about the meetup of President Trump with Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir. How do you look at this meeting? Is it a pivotal shift in foreign policy of US, or
What does this indicate for US-Pakistan relationships future? Right. Well, thank you for having me, first of all. It's just a remarkable development that we had this lunch meeting between President Trump and Field Marshal Munir. For the first few days, or for the few days before the meeting happened, there was a lot of uncertainty as to what the visit of Munir would actually entail. The Pakistani government, including the embassy here in Washington, had not really provided many details about his agenda and his schedule. So we go from that uncertainty to suddenly learning that he's going to be meeting with the president. And it was a remarkable meeting because, among other things, it's the first time that something like this had happened, essentially, for a U.S. president to invite a Pakistani army chief who is not also the head of state to a lunch or a meeting at the White House. So, there's really no precedent for that. That's significant. And also the fact that the meeting took place, and it was not just a brief lunch. It was, according to the readout from ISPR, 2 hours. That is a long time for the president of the United States to spend with a visiting foreign official, and especially at a moment when President Trump is facing a major foreign policy crisis, that being the war, the Israel-Iran war. So it's really remarkable on the whole. Now, you asked if this represents a shift in approach or policy for the U.S. vis-a-vis Pakistan. I don't think that the fact that you had this meeting, that in of itself does not represent a policy shift, but I do think it reflects a very different approach that President Trump takes to U.S. foreign policy compared to his predecessors. I think it's very personality driven, not necessarily tied to, a very clear formal policy driven approach. Clearly, President Trump concluded that, ties with Pakistan can be advanced, and U.S. goals vis-a-vis Pakistan, and perhaps U.S. goals in foreign policy more broadly, could be advanced by meeting with Yeah. the individual who's widely viewed as the most powerful figure in Pakistan. Before we talk about subjects which were discussed in this meeting, but do you think that there has been a different posturing of U.S. towards Pakistan post Pakistan-India conflict? Oh, absolutely. Yeah. Well, I mean, not completely in the sense that you'll remember very soon after President Trump took office, he gave a speech to Congress in which he praised Pakistan for helping the U.S. with the counterterrorism operation. So there's been a lot of there had already been positive messaging from the Trump administration toward Pakistan before the Pahalgam attack and before the India-Pakistan conflict. But indeed, if we look at U.S. government messaging from the day that the ceasefire was announced up to the present day, it's just been unusually positive, particularly given that when Trump was president the last time, especially early in his term, he was very critical of Pakistan. Yeah. There's the infamous New Year's tweet when he referred to Pakistan's lies and deceit. So clearly, the tone is very different, and the positivity of it is certainly very striking and indeed very concerning for New Delhi. Yeah, but I was coming to this point. You must have seen the responses and reactions from Delhi, especially BJP. Are they really isolated in terms of diplomatic, engagements? Because if you look at Bangladesh, China and Pakistan are holding trilateral meetings. Earlier to this meeting, there was a trilateral meeting of Afghanistan, Pakistan, and China. So, do you think this isolation is coming down to the regional isolation as well? No, I would not say that. I mean, definitely India, of course, has a very serious challenge with Pakistan. The relationship is of course a mess, and indeed it has a newer challenge with Bangladesh. I mean, Yeah. that's very clear that the India-Bangladesh relationship has changed a lot since Sheikh Hasina left. But I mean, this in the next 2 days, India's defense minister is going to travel to China. That relationship is of course fraught, but at least before the India-Pakistan conflict, there had been some steps on the part of India and China to try to reduce tensions. There was a border deal last year. I mean, India also, to the surprise of many, has been able to expand ties with the Taliban in Afghanistan.
And for all the talk about how you have a number of new leaders in South Asia that lean more toward China than India, in the Maldives and Sri Lanka and Nepal, and indeed in Bangladesh, I do think that India's relationship with these countries, aside from Bangladesh, is still quite strong. So Yeah. I do think India has faced diplomatic setbacks globally in the world. But in terms of the region, I think it's the same challenge with Pakistan, the new challenge with Bangladesh. But beyond that, I actually think it's holding its own. So let's talk about ceasefire. How are the chances of another breakout again between Pakistan and India? And what is the red line that could push the region from a conventional conflict into a nuclear nightmare? Or do you think, and you are convinced that this threat is over, at least for another decade or so? Yeah, so the ceasefire is very fragile, and I do worry about the risk of a fresh conflict coming sooner rather than later. I do not think either country has an interest in breaking the ceasefire. But if you look at the messaging, particularly from the Indian side, the speech that Prime Minister Modi made after the ceasefire, he and others in the Indian government are not describing the ceasefire as a ceasefire. They're essentially describing it as simply a pause, and suggesting that the conflict has not ended yet. And the new doctrine that Modi has laid out, I think, is something that could potentially be quite escalatory. In essence, the next terrorist attack in India, according to Modi, would be treated as an act of war, Yeah. suggesting that any attack in India, no matter who was behind it, would be viewed as something connected to Pakistan and would then invite an immediate, muscular, aggressive Indian response. So that suggests that the escalation ladder, that India would be perfectly comfortable to climb high up the escalation ladder initially in the next conflict. And of course, the higher you climb up the escalation ladder, the closer you get to the nuclear threshold. I do think that both countries continue to respect the nuclear deterrent for sure. But this last conflict, I think, tested that deterrent more so than we've seen at any time since both countries formally became nuclear in '98. The Kargil conflict, I think, was different than this one. It did not Yeah. involve such a level of intensity in terms of hostilities. It was a very geographically contained space. This recent conflict, it covered Kashmir. It covered other regions of both countries too. We've seen this pattern over the last few years that each conflict that takes place is increasingly intense. Looking at 2016, looking at 2019, and looking at now, suggesting that the next one could be even more intense and more escalatory, which is very Since you have concerning. already mentioned that escalation ladder would go high in any next conflict in the case of if a war breaks out, with India heavily investing in new military tech and Pakistan relying on strategic deterrence, how fragile is the balance? Really, are we sitting on a ticking time bomb? Do you think that there is a shift in the deterrence balance also, because maybe Pakistan was not calculated rightly by the Indian side? Well, I mean, if you just look at the nature of this most recent conflict, I mean, if you look at the escalation dynamics and the type and the scale of the hostilities, drones were used for the first time in combat operations between India and Pakistan, and the fact that both countries were drawing on their own weaponry, their own indigenously produced weaponry, as well as weaponry from multiple other countries. And I think that there's been so much discussion about how India has been able to diversify its sources of arms suppliers, Russia, but also increasingly the US, Israel, Yeah. France, and so on. But Pakistan, as we know, was able to use Chinese-made jets for the first time in combat operations against India, but it was also using Turkish-made drones. So this all suggests to me that each country is very comfortable using increasing amounts of force with increasing levels of intensity below the nuclear threshold. But Yeah. still, you're sort of pushing your luck. You just assume that you could continue to go higher while assuming that you continue to go beneath that threshold. I do Yeah. think that each But side does respect the deterrent. But keeping in view the economic constraints of both sides, is there any realistic scenario where India and Pakistan could move beyond deterrence to actual trust?
Well, I don't think that's a viable option right now. Just because if you look at the steps that India took soon after the Pahalgam attack, the punitive steps it took on diplomatic levels, such as suspending the Indus Waters Treaty, cutting off all trade, closing the Wagah-Atari border, I think that's reduced the space for engagement and dialogue. And when you don't have space for engagement and dialogue, it's very difficult to build trust, quite frankly. As you know, Marco Rubio, the Secretary of State, posted on X soon after the ceasefire was announced that India and Pakistan had agreed to dialogue on a broad set of issues in a neutral site. I find it hard to believe that India would have agreed to that because India has clearly been the main holdout. India has said that it really would not want to talk at all, except if the topic is Pakistan administered Kashmir. There's a mismatch there. So I just don't think that now is the time where we can expect things to come back together. I think that this is more of a long-term prospect. I mean, as you Yeah. know, there have been efforts toward peace processes. But The Pervez interesting. Musharraf. But interestingly, we have not seen any clear messaging about Kashmir from U.S. President Trump lately. Well, I mean, he did renew his offer that he made during his first term to mediate on the Kashmir issue. Um, it would be interesting to know if that came up during the meeting between Trump and Field Marshal Munir. But that's not a U.S. position. I mean, U.S. policy is essentially not to want to be a mediator. And I think in that sense, what Trump said when he renewed this offer soon after the ceasefire to mediate on the Kashmir issue. We didn't hear that again. No other U.S. officials have made that offer. And so I don't think that reflects at all a change in U.S. policy. Yeah, thank you, Michael. We will take a short break here, and when we will come back, we would like to talk about Iran-Israel conflict. इसराइल और ईरान की जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका का जो बिलखसूस किरदार है, माइकल कुगलमैन से उस हवाले से भी बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी. और इससे पहले हमने पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात और उसमें जो भारत का एलिमेंट है, रीजन की बात हमने कर ली. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईरान इजराइल एंड वेयर डज यूएस स्टैंड इन दिस conflict. Michael, there are reports that President Trump is thinking about joining this war in real sense and attacking Iran, and he has said that he would decide in next 2 weeks. How do you look at his options? It's interesting that what Trump is dealing with right now is, I think, for him, one of his biggest fears in terms of foreign policy. What he has wanted to avoid at all cost is being in a position where questions will be asked about whether the U.S. should get involved in a war. I mean, he was elected on a platform to not get involved, not to start wars, not get involved in other countries' wars. And I think for Trump, the biggest concern actually laid elsewhere. I think he didn't want to be in a situation where China would invade Taiwan, hypothetically, and there would be all this pressure on the U.S. to play some type of military role. This is a very different type of war contingency that we're talking about. I really do not think that President Trump wants to join the war militarily alongside Israel. I really don't think he wants that. And I would not be surprised if his messaging, including his tough talk and his insistence that Iran cannot have a nuclear weapon, I would not be surprised if that's a pressure tactic to try to get Iran to back away and agree to some type of negotiation. But is it getting results for him, like desired results? Because Iran has clearly not. Iran has clearly said that they are not going to bend down to these threats, and also they're not agree to come on for the talks unless Israel is stopped from attacking their sovereign land. Well, I mean, you make a good point. I was going to mention this myself, that even if Iran were to come around to the idea of a negotiation, I don't think Israel is interested in ending its campaign. I mean, we've seen that when India declares its objectives in a war, it does not back away from them. And we've seen this in Gaza, that Israel has said it's going to keep fighting until Hamas is destroyed. Now, in the case of Iran, I mean, its stated objective is to
eliminate Iran's capacity to develop a nuclear weapon, but it looks like the objectives might have evolved to focus on regime removal as well. Let's be clear. I mean, Trump will be under a lot of pressure from the Israelis, and given the special nature of the U.S. relationship with Israel, it could become a very difficult decision for the president, as much as he would likely not want to be involved militarily. If the pressure builds, and especially if Iran continues to retaliate as it is, or respond as it is, that Yeah, could which put is more likely pressure to on be Trump. the case. Exactly. And also, I mean, another risk, I mean, if the US does intervene militarily alongside Israel, I would not be surprised if Iran and indeed its proxies retaliate by targeting countries that house US military bases in the Middle East. And that's definitely something that Trump does not want either. So it's a tough decision for him. Yeah, but if we look at China's interest and China's body language regarding Israel-Iran conflict and a possibility of U.S. joining in with Israel, it makes it more difficult. And you mentioned regime change. Do you think that is a wise thing? Because you must have seen from France to Russia to China to even Pakistan, Field Marshal Asam Munir is reportedly mentioned that he also told President Trump that regime change is not a viable idea for Iran, and you really can't mix Gaza and Iran. Well, I mean, I think there's a pretty strong consensus around this idea. And I say this, I mean, this came up at the G7 summit for sure. Yeah. A strong consensus around the idea that Iran cannot have a nuclear weapon, but there is no consensus emerging around the idea that Iran's regime has to go. I mean, that is not a position that's going to have much support. I mean, clearly the Trump administration is no fan of the current regime in Iran, as, of course, there's been a hostile relationship between the US and Iran since 1979. But I do not think that Israel would be able to develop a consensus of like-minded nations backing such a goal. And China, for sure, would not back that. I mean, as you know, Beijing's interest in Iran, as they are in so many other countries of the world, are commercial, and this interested in investment. China and Iran have really strengthened their ties in a big way in recent years, for sure. Yeah. China wants this war to end. Honestly, I think Beijing could potentially be seen as a mediator, just because it has a good relationship with Iran. It has a very interesting, complex relationship with Israel as well. Yeah. But it's unclear if Beijing would want to get involved in such a sensitive issue. So last question, as you mentioned earlier, that Israel is not really looking for mediation or to end this conflict because they have maybe overstated their targets, which they could not achieve in Gaza. But in the case of Iran, this whole region and, world oil trade, economy of, global economy is also under threat. So where do you look, there's a halt, or maybe there's a ceasefire, or there's a a point where both sides take their positions to, a step back, maybe a step down? Well, I think the question is, you have to get to a point where one can declare victory and sell that victory to the public back home. And I'm talking really here about Israel. Yeah. As I said before, Israel has appeared unrelenting when it comes to its wartime goals. And if it could essentially point to the achievement of essentially eliminating Iran's capacity to develop a nuclear weapon, that would entail taking out, these nuclear facilities in Iran. Israel hasn't gotten there yet. I think it would like U.S. military firepower to help with that goal. But I think that given that Israel's stated goals were to remove that Iranian capacity to develop a nuclear bomb, until Israel claims it has concrete proof to indicate that it's achieved that, it might not be willing to back away. But again, we'd have to see how the U.S. approaches this, how Trump might plan to go about this. If the Trump administration makes any threats, which I don't think it would do, such as to withhold future arms supplies to Israel, I don't think it would do that. But Israel tends to get its way with the U.S. because it is a very special relationship. The U.S. takes its relationship with Israel, of course, extremely seriously.
Thank you so much, Michael, for joining us. We will take a short break here जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एजाज चौधरी साहब से, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी. और जैसे ब्रेक पर जाते मैंने आपसे कहा था कि एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद होंगे. एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. सर, इस वक्त ज़ाहिर है इस रीजन में बहुत सारी डेवलपमेंट हैं. अक्रॉस द ग्लोब ही जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं वो बड़ी तेज़ी से उनमें जहतें तब्दील हो रही हैं. लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो एक अनप्रेसिडेंटेड एक तारीख साज मुलाकात हुई है, जो इससे पहले आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कितनी अहम मुलाकात है? इट इंडिकेट्स ए पॉजिटिव मूवमेंट. देखें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत ही कम कर दिए थे, खुसूसन जब अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें निकल गई 2021 में. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई ख़ास ऐसा नहीं था रवैया दिखाया कि कुर्बत हो. ये तो 10 मई का करिश्मा है कि उसके बाद से दुनिया को अंदाज़ा हुआ, अमेरिका को भी अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान एक खित्ते में एक बड़ी ताकत है जिसके साथ डील करना चाहिए. बहुत बड़ी मंडी भी है 240 मिलियन लोगों की. तो चुनांचे उन्होंने आपकी इस हकीकत को रिकग्नाइज किया है. अब बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कई हवालों से हो सकते हैं. काउंटर टेररिज्म जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है अफगानिस्तान की, ईरान के हवाले से भी किसी हद तक, लेकिन ज़्यादा हिंदुस्तान के हवाले से है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी सख्त औस पड़ी हुई है कि इन्होंने ये क्या हुआ, अमेरिका जो है वो तो हमारा बड़ा साथी था, ये पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ गया. और चीन के हवाले से भी ये अहम थी मुलाकात, क्योंकि ये बता दिया गया होगा कि चीन हमारा बड़ा गहरा दोस्त है, लेकिन हम सारे मुल्कों के साथ, सारी बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं. तो मैं तो जिस हवाले से भी देखूं, मुझे ये मुलाकात अहम दिखाई दी. एजाज साहब, आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपने तो वो जो पॉजिटिव साइड इस मुलाकात की, और पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े के ऊपर अपनी बड़ी वाज़े पोजीशन ली हुई है. लेकिन इस मुलाकात को बुनियाद बनाकर बहुत सारा मनफी प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, जिसमें ज़ाहिर है जो अमेरिका को हवाई अड्डे देने का खुफिया वादे से लेके बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान पे लग रहे हैं. किस तरह से देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, ये तो बहुत किस्म की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ज़्यादातर बेपर हैं. उनमें से एक तो ये था कि जी पाकिस्तान अपने मिसाइल और टेक्नोलॉजी ईरान के हवाले कर देगा. बिल्कुल गलत बात है. पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा. हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारा हिंदुस्तान से जारहियत को रोकने के लिए है. फिर ये भी कहा कि आज के पाकिस्तान इसराइल पे हमला कर देगा अपने मिसाइलों से. ये भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगेन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा. कि याद रखिए कि पाकिस्तान के लिए जो हिंदुस्तान के साथ जो जंग थी वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया है, पॉज किया है. तो हमें तो तैयार रखना है. तो हम एक जंग के होते हुए दूसरी जंग में कैसे कूद सकते हैं? हिंदुस्तान तो वावेला भी करेगा और इसराइल भी करेगा. लेकिन मेरे ख्याल में हमारे आर्मी चीफ ने यकीनन ये अमेरिकी सदर को बताया होगा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का हमसाया है. ईरान के साथ जो हमारी हमदर्दी है वो सियासी और अखलाकी है, और उसकी वजह ये कि वो इस वक्त विक्टिम है, उस पर जारहियत की गई. पाकिस्तान ने हमेशा ये सूली पोजीशन ली है कि विक्टिम के साथ खड़ा होता है. तो इस वक्त इसराइली उनके साथ, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो इसराइल को भी रोके और खुद भी जंग में शरीक ना हो. मेरा ख्याल में ये पैगाम वहां से गया होगा. ये बाकी सारी अफवाहें हैं. जी एजाज साहब, एक तरफ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो सफारती तौर पे अगर देखें तो बड़ा मजबूत हुआ है पाकिस्तान भारत जंग के बाद से, और पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है. दूसरी तरफ जो भारत को पहले मगरबी दुनिया से एक सपोर्ट मिलती थी या उनके साथ लोग जाकर खड़े हो जाते थे, वो अब नहीं मिली. तो आपको लगता है कि जो इंडिया इस वक्त जितने भी एक्शंस कर रहा है, जो उनकी पोस्टरिंग है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो इसी वजह से दबाव का शिकार है? जो हिंदुस्तान ने इस दफा केस बिल्ड किया सारा का सारा पहलगाम के ऊपर, वो झूठ पर मबनी था. कोई उनके पास सबूत नहीं था. आज तक भी, अब देखें ना कितनी देर हो गई, आज तक कोई सबूत नहीं आया, क्योंकि था ही कुछ नहीं. तो जब झूठ पे कोई चीज मुकदमा खड़ा किया जाए तो बहरहाल दूसरे मुल्क जो हैं उनकी आप जहानत को इंसल्ट तो ना करें. उनके पास भी इंटेलिजेंस है, उनके पास भी सैटेलाइट ऑपरेशन है. तो इस वक्त हिंदुस्तान को जो शॉक मिला है, उनका जो सदमा मिला है, उनके अपने
کرتوت ہیں ان کی وجہ سے، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں، ان کے اپنے کام ہیں اس طرح کے، ان کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی اب دنیا میں جو ساکھ تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر بھی ثالثی کی بات کی تھی، اور مودی صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت بڑی اپسٹ تھی اس ملاقات سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے صدر ٹرمپ کو کال کی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ دو طرفہ ہیں، ہم کسی تیسرے فریق کی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ جو پوزیشن لی ہے دلی نے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کشمیر ریلیٹڈ بات کا مجھے نہیں پتا، یقیناً آرمی چیف نے ذکر کیا ہوگا اور ان کو یاد دلایا ہوگا کہ آپ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کے اوپر کام کروں گا آپ کے ساتھ، اور آپ کو پتا کہ وہ تو خود بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ایک بہت بڑا پیس میکر ہوں۔ وہ تو ہندوستان کے لیے یہ ٹو بی آنےسٹ بڑی عجیب سی پوزیشن ہندوستان نے لے لی، کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں چاہیے کیونکہ ہم بائیلیٹرلی پاکستان کے ساتھ کریں گے دو طرفہ بنیادوں پر، لیکن دو طرفہ بنیادوں پر تو پچھلے 9 سال سے انہوں نے سارے رابطے بند کر رکھے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ اس لیے تھرڈ پارٹی میڈیشن دوسری دنیا کو تو سمجھ آتی ہے، بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن امریکہ نے یقیناً آفر کیا ہے، وہ ابھی بھی قائم ہے اس کے اوپر، اور یہ بھی کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہ جی ان کے کہنے پر نہیں ہوا، کہ جی جب کیا انہوں نے درخواست کی اور امریکہ نے اس کو اکنالج کیا تو پھر کیا ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ کیا اتنا بڑا پن ہے جب آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی چیز؟ جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو سوچا، آپ اس طرح نہیں تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں دھونس سے سارے ملکوں کو زیر کر لیں گے، یہ کوئی اچھی سوچ اور اچھی روش تو نہیں تھی۔ تو آج ان کو تقریباً وہی ہے اور امریکہ کے صدر کی شکل میں ان کو یہ سامنے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ خود معاملات کو حل نہیں کر سکتے تو کہیں اور سے مدد آ رہی ہو تو لے لیجئے۔ جی اعزاز صاحب، کچھ ایران اسرائیل جنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا، میں نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملے کرے گا تو ایران جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ایران نے تو ساری دنیا کو حیران کیا ہے، ایران کے جو جوابی بار ہیں ان میں کمی نہیں آ رہی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے گا تو پھر یہ جنگ پھیل جائے گی، اور امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ہفتے میں فیصلہ کروں گا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ، کتنے امکانات ہیں کہ امریکہ واقعی اس جنگ میں عملی طور پر بھی کودے گا؟ جی میری خواہش تو یہ ہوگی کہ امریکہ اس جنگ میں نہ آئے، لیکن خواہش تو انالیسز نہیں ہو سکتا نا، تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ جب میں امریکہ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے جب تک جتنی جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے اس کے بعد سے، چاہے ویتنام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، ان کو نقصان ہوا، اور اسی وجہ سے ان کے ہاں ایک بحث جاری ہے۔ ایون جو امریکہ کے صدر کی جو ایک موومنٹ تھی ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے جو بہت ہی اسٹرانگ پروپوننٹس تھے وہ بھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جنگ میں نہ کودیں۔ اسی وجہ سے امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ اتفاق رائے ابھی تک پیدا نہیں ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 15 دن اور لوں گا۔ 15 دن اسی لیے لے رہے ہیں کیونکہ داخلی لحاظ سے اس پہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اس میں شامل ہوتا ہے اور ان کے اڈوں پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں جو علاقے میں ہیں ان کے، تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی، اور امریکہ اس کے بعد جوابی کارروائی کرتا ہے تو ممکن ہے اور جو طاقتیں ہیں اس علاقے میں وہ بیچ میں شامل ہو جائیں، یہ خطرناک ہوگا، اور یہی بات اس وقت میرے خیال میں امریکہ کے صدر کو بتائی جا رہی ہوگی۔ بہرحال وہ ایک غیر روایتی صدر ہے، وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن میری خواہش تو یہی ہوگی کہ وہ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان خطے میں آ سکتا ہے۔ باقی جہاں رہا اسرائیل اور ایران کی جنگ تو وہ جاری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا آپ نے درست کہا، یہ غلط خیال تھا کہ جی ایران بیٹھ جائے گا، لیکن ایران نے ابھی تک تو اپنی پوری استطاعت دکھائی ہے، اور اگر ایران میں یہ استطاعت رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو شکست ہو جائے گی۔ بے شک ان کے پاس امریکہ کی طرف سے بہت سارا اسلحہ آ رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ کچھ کر نہیں سکے ہیں، اور اسرائیل تو چھوٹا سا ہے۔ اگر یہ ایران کے میزائل جاتے رہے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں تو اسرائیل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے نیتنیاہو کے خلاف کہ یہ تم نے ہمارے لیے کیا زندگی عذاب کر دی ہے۔ اسرائیل یاد رکھے کہ ایران غزہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اسرائیل جو ہے بمباری کرتا تھا وہ بیچارے جواب نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ اتنے عرصے سے قید ہے وہاں پہ، جبکہ ایران تو ایک آزاد ملک ہے، اس کی تیاری کی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جواب ابھی تک مسلسل دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسرائیل کو بھی جناب یہ جنگ جو ہے میرے خیال میں مہنگی پڑے گی۔ جی چودھری صاحب، ایران اور جو اسرائیل کا تنازع، اس میں چین، ترکی، روس جیسے جو ممالک ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی ایک بڑی واضح پوزیشن ہے
जो बराह रास्त जो अमरीकी सदर का लहजा है, जो उनकी तरफ से धमकियां हैं, अब उस पे रद्द-ए-अमल वहाँ से आ रहा है, तो आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को अमेरिका देख रहा है? चाइना ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया जो है वो चलती रही है और चल सकती है। जी देखिए, चीन तो कह रहा है, अमेरिका को समझा भी रहा है कि अगर आपने इस किस्म के काम किए तो याद रखिए कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी जिंदा रह सकती है। दूसरी बात यह कि चीन ने कहा कि हम इस इलाके में किरदार अदा करने को तैयार हैं, ठीक है जी। और तुर्की ने भी कहा है कि हम तैयार हैं, क्योंकि ये सारे मुल्क समझ सकते हैं कि इस जंग का शामिल रहना या जारी रहना बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा के। तो सुनिए जी, प्रोग्राम से आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।